power sector professionals can work across the world. Your companies can also work across the world. Grid is the largest machinery. Sir, could you share your insights on what would be the future of the grid? Oh, that's a very interesting question. Future to experts kar sakte hain. I cannot predict the future. There are certain developments which are good indication. Or one of the important development which is good indication of future is that the world has come up with the concept of one sun, one world, one grid. Half of the sun, half of the earth has sun shining, and half of the earth you have darkness. So if half of the earth which is shining, which is sunny, can produce electricity and supply electricity to the rest remaining part of the earth, so the entire world will help each other. इसको हम बोलते हैं intercontinental solar power grid to transfer solar power across the world. So for intercontinental solar power grid, discussions have already started full swing, and the world is thinking about creating that intercontinental solar power grid. It will help in mitigating climate change to a great extent actually. पहले हम लोग जब पावर सेक्टर प्रोफेशनल्स की बात करते थे, तो आप लोग जो काम कर सकते थे, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज थी या आपकी कंपनीज के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो कन्फाइंड थी कि भाई एक स्टेट में काम कर, फिर वो बढ़ के बड़े रीजन पे आप काम कर सकते, फिर आप पूरा इंडिया में काम कर। अब नेक्स्ट 10 years में पावर सेक्टर प्रोफेशनल्स कैन वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। योर कंपनीज कैन ऑल्सो वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आप जो भी पीएसयूज को आप देखेंगे, पहले नाम था नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अब नाम हो गया एनएचपीसी लिमिटेड। सो अब ये सरप्राइजिंग है कि सर ये क्या बात हुई, राज सिंह निरंजन जी एनएच का रॉयल नाम लगता था, एनएचपीसी लिमिटेड क्यों कर दिया? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इतना बढ़िया रॉयल नाम था बड़ा, लेकिन अब कोई नहीं लिखता, अब सब लिखते हैं एनटीपीसी लिमिटेड, बिकॉज दिस इज द न्यू नेम ऑफ द कंपनी। और न्यू नेम में क्या किया है उन्होंने? रीस्ट्रक्चर कर दिया है कंपनी। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पहले सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड सिर्फ हिमाचल प्रदेश में काम कर, उसके जो एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जहां पे ऑब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कंपनी के, उसमें ऑब्जेक्ट्स में ये लिखा हुआ था कि भाई ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है और एक ही जगह पे काम करेगी और कुछ काम नहीं करेगी। लेकिन जब एसजेवीएन लिमिटेड बना दिया तो उसका एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बहुत लार्ज कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में काम कर। तो एसजेवीएन बनने के बाद आपने देखा उनका इन्वेस्टमेंट नेपाल में हो गया, उनका इन्वेस्टमेंट भूटान में हो गया, उनका इन्वेस्टमेंट बिहार में हो गया, जबकि वो पावर कंपनी बनी थी हिमाचल प्रदेश की। सिमिलरली नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का काम था सिर्फ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, लेकिन जैसे उसको एनटीपीसी बनाया गया और उसका एमओए एओए चेंज कर दिया गया, तो उसमें लिख दिया गया कि आप हाइड्रो में भी काम कर सकते हो, सोलर में भी काम कर सकते हो, विंड में भी काम कर सकते हो। तो आप देख लो उन्होंने हाइड्रो पावर प्लांट एक्वायर कर लिए हैं सिक्किम में, वो सोलर प्लांट बना रहे हैं, फिर बहुत सारी अलग अलग चीजें कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो नाउ अपॉर्चुनिटीज फॉर योर, जब भी आप देखो कॉर्पोरेटाइज होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज या सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज, उनका एरिया वाइड हो जाएगा। इंटरनेशनल ट्रांसमिशन में वी विल हैव अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू वर्क। फर्स्ट आप जस्ट सी द मैप व्हिच द श्रद्धा has shared. So if you see it start there is distinct line if you see in the map. First line starts from the transmission line starts from Cape Town, crosses all the way Africa, and from the Sinai Peninsula, Egypt, it crosses over to Eurasian continent. Then it crosses the Eurasian continent through that Russia and then Alaska. It crosses over to Alaska, that is North America. And from Alaska, Canada, and then USA, then Latin America, and then Chile. It ends in Chile actually. So one of the executive engineers in Chhattisgarh Transmission Corporation or Chhattisgarh Distribution Corporation was the first person to give this concept of intercontinental solar power grid. Okay, and this concept, this is around 7 years back he made this map, if I am correct. I have to confirm from him. Now this discussion has gone very, very far actually, and we are not talking about only land-based solar grid. We are also talking about undersea grid. So what has happened? Norway and Germany has set up 525 kV subsea interconnector Nordling project. So now Norway and Germany are connected with each other. So whenever there is excess power there are a lot of hydroelectricity power plant in Norway actually, and there is a lot of solar and wind power plant in Germany. So they exchange power from each other with each other by using that undersea cable line. Similarly, Australia and Singapore have signed an agreement to connect Darwin in Australia, northern port of Australia, to Singapore by undersea cable line, which is called Australia ASEAN Power Link AAPL project. So it is $22 billion project, and 4,500 kilometers undersea cable lines will be laid down.
Thirdly, if you see, India is now connected with 4 countries. So it is connected with Bhutan, Nepal, Myanmar, and Bangladesh. So you can effectively import and export power. The transmission grids of these 4 countries are connected. So you can import and export power from these countries. Now, NTPC is working for connecting India and Sri Lanka. So Madurai line will be connected with Colombo, Sri Lanka. So we will have an undersea transmission line in India and subcontinent also. So I was also advising the government, if you want, we can also connect Port Blair by undersea cable line from Chennai to Port Blair, just as we have connected it with a 4G cable line. So earlier we did not have 4G in facility in Andaman and Nicobar Islands, but recently 1 or 2 years back, undersea cable line was laid down, and now to have 4G connections in Andaman and Nicobar Islands. So similarly, we can have electricity connection on which can be extended to Singapore. Once this connection is established to Singapore, automatically Australian grid and Indian grid gets connected. Both are very large grids. So when there is a massive demand in Australia, so if you have seen the map of Australia, 90% of the population रहती है वो ईस्ट कोस्ट पे, Adelaide or Melbourne, Sydney, Tasmania, and Gold Coast, all are there in the East Coast. जब वहां पे मैक्सिमम पावर डिमांड होती है शाम के 5 घंटे का रास्ता है, 5 घंटे का डिफरेंस है टाइम डिफरेंस, जब मैक्सिमम पावर डिमांड होती है ईस्ट कोस्ट में, तब थार डेजर्ट में या इंडिया में जो हमारे हैं मध्य प्रदेश में या राजस्थान में बेस्ट पावर प्रोड्यूस हो सकती है, सोलर पावर आई एम टॉकिंग. सो इफ दीज काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस जॉइन हैंड, दैट विल बी अ इमेंस, देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस इन हाउ वी सी द पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर इन द वर्ल्ड. देयर इज no need of transporting lot of oil and natural gas from across the world and burning greenhouse gas. Simply we have to mitigate climate change by using those innovative methods and technology. एक और opportunity है import export को feasible बनाने के लिए जो government of India ने guidelines निकाली है, which is called guidelines for import export cross border of 2018. By using those guidelines, you can import and export electricity from India.